अभी इस स्लाइड पे आते हैं तो आप देख सकते हो वेन डायग्राम बना हुआ है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस के बीच में एक कोरिलेशन मैपिंग दिया हुआ है। सो इससे क्लियर है जो एआई, एमएल और डीएल का जो रिलेशन है कि एआई जो है वो पेरेंट सेट है एमएल का, राइट, और एमएल जो है वो पेरेंट सेट है डीएल का। मतलब मशीन लर्निंग का अंदर अपन जो भी करते हैं, वट एवर थिंग्स दैट वी आर doing inside machine learning is practically artificial intelligence, and whatever thing we are doing practically inside deep learning, so let's say CNN, RNN, DNN, normal जो करते हैं, all these are machine learning, right? Now the next thing is what is data science. So if you see, data science has some portion of artificial intelligence, machine learning and deep learning embedded in it, and it has some freebie part or some different part. So that different part which is not included in AI, ML and DL, that is one of the major thing you need to study, that is statistics. So statistics plus some math concept will be required to master data science. Now what is data science? Because practically in my previous video I have talked about AI, ML and DL. Data science is basically a discipline where you try to figure out the meaning of data or patterns in data. So it is a, so I mean you can say a field where you mine the data, right? So what you need to master this data science thing, your statistics, mathematics and some of your machine learning plus storytelling. Okay, now here comes the actual picture, what it requires. So as you can see, data science relies in the intersection of statistics, mathematics, machine learning, right? What AI and computer science, what we said, right? So this is crucial. It's a crucial skill to master, right? But we can obviously do it. And as you can see below, if you have domain knowledge also, then you can become a data miner, right? So for mining means, what is mining? Mining means what is a coal miner? So those who dig deeper go into the coal mines and find out diamonds, right? So data mining means if you have, let's say you are working in insurance domain, you have knowledge in insurance domain and you find some relationship, uh, or you build some model that predicts whether to give a person insurance or not, right? That is what data mining is. Now another topic is predictive analytics. As you know that there are four type of analytics. One of them is predictive analytics, that also depends upon your machine learning and some of statistics. Then you have this here modeling thing, which is also equally important. Pattern recognition is also important. Domain knowledge, so the more you will work you will gain this domain knowledge, right? Let me change back to, okay. And here you can see the entry level jobs, right? That means data analysis. So this is what the overall Venn diagram looks like. So at the very beginning you will have computer science, which will take care of all of this, artificial intelligence plus programming. So as a subset of AI, CS you will have AI, and from AI you will have ML, from ML you will have DL, which is not included here. And also this is very much important, computing cognitive computing. It is also very much important, but I don't think like you will have to do some separate courses regarding this. So this is the overall Venn diagram.
Now here you can also see from skills perspective what it requires: some math and stat knowledge, as you can see it is required, then some machine learning knowledge, some hacking skills, data science. So data science relies in the intersection of this hacking skill, machine learning, math and stat knowledge. Okay, so there is also some ethics included in it, uh, and all of this. Like, now this is very much important to understand what is machine learning and all. So normally in a rule based programming method, that means my this will be my traditional model or method. Okay, so my traditional model or method, what it will include, in this you will have input, right? And the target is to predict the output. So the output is unknown, and what you build, you build the rule, right? So let's say a series, right? So you find that you need to figure out a way so that you can represent 1 as 3, then 3 as 5, then 5 as 7, then 7 as 9, and then 9 as 11. Let's say this is the thing. So what you will do, you will write a function, right? So in, let's say I'm writing it in Python, def foo x, in that return x plus 2, something like this, right? So what it will do, it will take x and it will return x plus 2. So in that way you will have inputs, right? You will have outputs, and what you return the rule, right? This is what you write. So this is your intelligence, right? Now what is machine learning or artificial intelligence? You will have the output as well as the input. you, the machine will decide what will be the rule. So this x plus 2, okay, or maybe let's say for another problem it is x plus 12. So you are not going to decide, the machine will decide, right? So imagine a situation where you have to automate such kind of x plus 2 or x plus 12 for a large number of data set, right? So it will become very handy for that use cases. Now we have decided that we will talk about Dataiku, right? So Dataiku is nothing but a AI aggregated tool, basically your day-to-day machine learning projects, where it centralized all the requirements or components of machine learning. Okay, so now if you see in this chart how today's AI technology looks like. So let's say this is my centralized AI project. It consumes web traffic, mobile traffic, IoT sensors data, people intelligence. It consumes, it will have all the cloud support and all the connectivities, right? So all of this will combine in a AI project. Okay, so what is the problem? What is the problem of this concept, right? Or this project that we discussed, कि इसमें problem क्या हो रहा है? So as you can see here कि द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो है स्केलेबिलिटी. कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का, अगर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक फर्स्ट थिंग अगर मैं बताऊं जो आपको चाहिए टू बी मास्टर
or to become successful in that particular software domain और इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, उस फील्ड में अगर आपको मास्टर करना है वो है स्केलेबिलिटी, राइट। कुछ भी करो आप उसको स्केलेबल बनाओ, स्केल। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट या फिर प्रोग्रामिंग पैराडाइम ही है। सो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो what you will be required, you will need to scale, right? AI platforms that can scale, right? सो यही यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बनाना है जो स्केल कर पाए। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, जैसे देख रहे हो इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिवनेस। मतलब मशीन लर्निंग में कभी कभी क्या होता है ना कि एक बंदे का जो इंडिविजुअल दिमाग है, मान लो वो इतना अच्छा काम काम कर जाता है कि पूरा टीम का वो काम नहीं कर पाता है। तो इस इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिवनेस को हमको एड्रेस करना होता है कि भाई किसका बात सही है, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि झुंड के साथ चले जाओ, लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा अप्रोच हमेशा सही नहीं होता है। लेट्स से पर कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें इसको 100% पता है जो इसका अप्रोच है वो सही है, और इन लोगों का अप्रोच लेट्स से 30% तक सही है। सो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अपन कलेक्टिवनेस के साथ जाते हैं, राइट। उतना क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं होता है नॉर्मल डे टू डे प्रोग्रामिंग पे, बट मशीन लर्निंग पे ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। और दूसरा होता है कि रैशनैलिटी और क्रिएटिविटी के बीच में कैसे अपन मैनेज करें। सो रैशनैलिटी आपको पता ही होगा, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड्स है वो, और जो अपन का क्रिएटिविटी होता है वो है कि कितना यूनिकनेस हम लोग दिखा रहे हैं, राइट। सो ये दोनों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो डेटा आईक्यू कैसे इन सब चीज़ों को सॉल्व करता है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिया हुआ है। सबसे पहला है कि इसका टेक्नोलॉजी पावरफुल है, ये कोलैबोरेटिव अप्रोच पे बिलीव करता है, तो बहुत सारे आपके टीम मेंबर्स को ये ज्वाइन करवाता है एक ही प्लेटफॉर्म में। तीसरा है कि पीपल इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है, इंडिविजुअल टैलेंट्स को बढ़ावा देता है, एक्सेप्शनल एआई प्रोजेक्ट्स बनाता है, और छठा सबसे इम्पोर्टेंट है कॉमन टूल्स। तो लेट्स से मैं अगर बात करूँ कि मेरे को ईडीए बनाना है, ठीक है, आई वांट टू बिल्ड ईडीए नोटबुक। सो मैं किस किस पे बना सकता हूँ, मैं पाइथन यूज़ कर सकता हूँ, राइट, मैं आर यूज़ कर सकता हूँ, और इवन दिस पाइथन और आर नोटबुक को मैं लेट्स से जीसीपी, अपन के पास AWS है, अपन के पास राइट, अपन के पास एज्यूर है, राइट। सो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं यहीं पे। या फिर मान लो कि कुछ विजुअलाइज करना है मुझे, तो मेरे पास सैस एक ऑप्शन हो गया, मेरे पास टैबलू ऑप्शन हो गया, पावर बीआई है मेरे पास, अभी सिग्मा कंप्यूटिंग है, राइट। हम लोग इसमें भी कुछ कुछ कवर करेंगे, जैसे अपन टैबलू कवर करेंगे, सैस कवर करेंगे बाद में, पाइथन, आर, AWS, तो ये सब अपन बाद में कवर करेंगे। तो इतने सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है, सिर्फ एक सिंगल ईडीए या फिर डेटा साइंस का जो एक्सप्लोरेशन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन को कवर करने के लिए, ठीक है। तो डेटा आईक्यू क्या करता है, डेटा आईक्यू ये सारे टूल्स को एलिमिनेट कर देता है और एक